हेलो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है, चलिए डिस्कशन करते हैं ग्लोबल मैक्रो के बारे में। व्हाट द ग्लोबल मैक्रो इज सजेस्टिंग एंड व्हाट अ बिट ऑफ व्हाट मैं क्या देख रहा हूँ, चलिए एक साथ देखते हैं। कहाँ से चालू करेंगे ये ग्लोबल मैक्रो का एनालिसिस। ग्लोबल मैक्रो का एनालिसिस जो है वो डिफरेंट वेबसाइट तो है ही, बट उसके अलावा लेट्स गो टू tradingeconomics.com, जो एक काइंड ऑफ हाफ फ्री एंड कुछ सर्विसेज है जो पेड सर्विस। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन गो टू द कैलेंडर, आप investing.com इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन मैक्रो माइक्रो का डेली, ये जो डेली कैलेंडर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट कैलेंडर को मिक्स करके देखता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाने के बाद मैं जो कर रहा हूँ बेसिकली फॉर नेक्स्ट वीक, पूरा वीक देखना है। आई थिंक ये दिस वीक लेगा, या फ्रॉम दिस वीक एंड इम्पैक्ट टू स्टार इवेंट्स। तो ये जो वीक है ब्रॉडली बहुत ही ठंडा वीक है। वी डोंट हैव मेजॉरिटी डेटा ऑन मंडे। जापान मशीनरी ऑर्डर्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट, बट मार्केट मूविंग इमीडिएट इम्पैक्ट वाइज डेटा नहीं है। सिमिलर गोज फॉर ट्यूसडे, एक्सेप्ट फॉर चाइनीज सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है, जो यहाँ पे डेली में भी दिख रहा है। चाइना इंटरेस्ट रेट पॉलिसी समवेयर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, उसमें बेस मेटल विल बी इम्पैक्टेड, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट वैरी करेगा कि चाइना क्या कर रहा है, व्हाट इज देयर पॉलिसी एक्शन। बट ये बेस मेटल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर आ रहा है कनाडा का इन्फ्लेशन रेट। ये जो लोग इंडिया से ट्रेड करें उनके लिए नहीं, बट दोज हु आर आउटसाइड आवर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर ट्रेडिंग द कैनेडियन डॉलर और द लूनी। उसको लूनी बोलते हैं कैनेडियन डॉलर को। So how it comes, if the inflation is higher, obviously then the interest rate expectation will go up and you Canadian dollar will start finding bids, उसको buying pressure मिलेगा। फिर हम लोग जिसमें आ रहे हैं वेडनेसडे भी, इट्स प्रीटी लाइट, नथिंग सिग्निफिकेंट डेटा वाइज ऑन द 2 star event. There are some speech like Fed president is there, Bostic Fed member. Then we have Bank of Canada's member. So these will be small mover. One big mover can be, depending on क्या communicate हो रहा है, that is from the FOMC minute that Wednesday. ये थोड़ा थर्सडे का जो निफ्टी एक्सपायरी है might impact, सपोज इफ फेड थोड़ा हॉकिश बोला है, जो विच इज चांस ज्यादा है, the interest may see some light downside pressure, नीचे गैप अप गैप डाउन होने का चांस ज्यादा रहता है। करेंसी कमोडिटी के लिए दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, स्पेशली करेंसीज के लिए फ्लैश पीएमआई, मेन पीएमआई आता है एट द एंड ऑफ द मंथ, ये इन द मिड मंथ पीएमआई, और इसको फ्लैश पीएमआई बोलते हैं, जो एक आइडिया देता है कि एंड मंथ पीएमआई और सर्वे डेटा कैसा होगा। पीएमआई इज बेसिकली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो एक सर्वे सेंटिमेंट इंडेक्स है, जो रियल मैनेजर्स के सेंटिमेंट, मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग हाउस में बैठे हैं लाइक टाटा मोटर्स, उनके सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। आप इनके बारे में और जान सकते हैं। इफ यू वुड लाइक यू कैन ज्वाइन माय कोर्स elonmarkets.com में जाके, if you just type SAA, my name will come, Shanando Dash, and this is covers the fundamental aspect macroeconomy. So if you want, you can subscribe to this. So here I have this is the PMI. Uske baad this is the UK PMI bhi. Then we have the US flash PMI. Regular crude oil inventory ke jagah is the 9:30 Thursday. There is one holiday. So that's why इस हफ्ते US holiday है. That's why it push back. Usually Wednesday आता है crude oil का data. So 9 बजे रहेगा natural gas inventory, 9:30 बजे रहेगा क्रूड ऑयल इन्वेंटरी। फ्राइडे मेजोरिटी रात को जो आ रहे हैं, दैट इज द फेड स्पीकर्स, वो क्या सोच रहे हैं, दैट विल बी इन्फ्लुएंसिंग टू द इंटरेस्ट रेट बिट ऑफ एंड ऑल्सो टू द डॉलर। बट ब्रॉडली फेड अपना कम्युनिकेशन कर चुका है, बट सिंस इतना हॉकिश रिसेंट कम्युनिकेशन आया है, मार्केट
सुनना चाहेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं. दिस इज कमिंग लेट थर्सडे नाइट विच इज फ्राइडे मॉर्निंग फॉर अस दोज who are in India. So pretty light week, no major event wise. So this week will be more technical picture influence. It could be more of a continuation. New trade born हो सकता है. So हम लोग regular watch रखेंगे कि what's happening. इसके अलावा चलिए अब चलते हैं ग्लोबल मैक्रो पे. ग्लोबल मैक्रो में मैं जहां पे आ गया हूं, दिस इज द सेंट्रल बैंक. और इस रिलेटेड आई विल लाइक टू डिस्कस और हाईलाइट एक डेटा. दिस इज द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कैलेंडर. देन लेट्स गो टू प्रीवियस वीक. Previous week, we had this core inflation rate, which was stubbornly high at 3.9%. Then finally, we had about we had the hot PPI. PPI numbers were strong. Core PPI was especially strong. It was up 0.5%. इसके साथ फेडरल रिजर्व का हॉकिश मतलब इंटरेस्ट रेट हाई रखने का कम्युनिकेशन, इसको ऐड करने का रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इन द मार्केट एक्सपेक्टेशन. हम लोग जब चालू किए थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 150 बेसिस पॉइंट्स रेट कट फ्रॉम फेडरल रिजर्व. अभी फर्स्ट उस टाइम पे रेट कट वाज एक्सपेक्टेड फर्स्ट इन द मंथ ऑफ मार्च. I was expecting maybe looking at the bear steepening of the yield curve. मैं सोच रहा था शायद फेड सरप्राइज करे टुवर्ड्स द डोव और एक सरप्राइज अर्ली रेट कट दे दे, बट ऐसा हुआ नहीं. बट जैसा मेरा मॉडल जिस हिसाब से चलता है, हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि मार्च में देयर विल बी, बट मॉडल इज नाउ शोइंग विद द प्रोबेबिलिटी मॉडल कि जो रेट कट आ रहा है दैट इज मोर इज नाउ गेटिंग शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स जून. ये जो मई का जो रेट हाइक वो रेट कट वो भी इवेपोरेट हो रहा है मोर टुवर्ड्स द June. So I will go with the model. If the probability is suggesting June will be the rate cut, I'll go with that. But this is a very unusual time. I think we may get early because underlying situations are not that well. We are getting actually a mixed picture, and that is largely because of COVID. COVID has complicated ये जो macro lag हम लोग बोलते हैं, early indication of a cycle coming to an end और exact cycle का recession crash end, इसमें जो gap रहता है इसको बोलते हैं macro lag. So COVID-19 ये जो है this has changed this macro lag. And ये जो business cycle है, this is clearly coming to an end. We can see with the leading indicator. If I go to every time before the crash comes or the cycle ends, business cycle, this the leading indicator starts coming down. And it is coming down. We have not hit the recession button yet. But this is a significant sign that we are at the end of the almost at the end of the business cycle. So and ये बिजनेस साइकिल के साथ फेडरल रिजर्व का जो रिश्ता है वो बहुत ही मतलब यूनिक है. मतलब business cycle usually comes to a crashing end after the Federal Reserve has initiated one or two rate cut. So first we was expecting कि March में rate cut होगा, then obviously then we need 4-5 months, then the vulnerable जो period था contraction का, it was coming somewhere around then we have September, October around. So at around that time, but with Federal Reserve continuously pushing the rate cut low later, we might see once again an extension of the lag and the cycle to bit continue. So ये जो रिश्ता है इसके ऊपर मैं आई एम क्लोजली कीपिंग एन आई कैसा फेडरल रिजर्व बिहेव कर रहा है. सो फार इट दे हैव बीन हॉकिश.
but that can change depending on what kind of data we can see. Inflation data जो आ रहा है, that is a bit of 1 month behind data. I think the base it effect जब set in करना चालू होगा, we might see further come down in inflation going ahead. इसके साथ एक इंटरेस्टिंग जो आ रहा है, दैट इज द एनवीडिया अर्निंग्स रिपोर्ट ऑन थर्सडे. ये एनवीडिया का अर्निंग्स रिपोर्ट विल बी इन्फ्लुएंशियल फॉर ओवरऑल सेंटिमेंट. एआई को लेके जो मैडनेस मैडनेस नहीं बोले, जो हाइप बोलिए या फिर एआई को लेके जितना ऑप्टिमिज्म है, so if nvidia earnings do not match or do not hold up, then it could be an issue. But whereas on the other hand, if nvidia earnings do hold up, we are likely to, even if nvidia say after earnings it falls, but overall it would boost the market sentiment that yes, in ai segment earnings coming up. So this is one earnings you want to keep a close watch on. इसके अलावा मैं डिफरेंट इंडिकेटर के साथ चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर नजर रख रहा हूं. ये एक वनरेबल जोन है. और एक जोन के ऊपर मैं नजर रख रहा हूं. लेट मी ब्रिंग इट इफ आई कैन. या दैट इज द मैरीटाइम शिपिंग. मैं शिपिंग इंडस्ट्री पे ध्यान रखता हूं बिकॉज ग्लोबल हमारे जैसे बॉडी में वेन्स रहते हैं. सो ग्लोबल जो सप्लाई चेन उनका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दिस शिपिंग चैनल्स. और लास्ट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इन द मिडल ईस्ट बिटवीन हाउथी रेबल्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स यूके, ये जो पावर है उनके साथ हाउथी रेबल्स का टेंशन, ईरान के टेंशन के वजह से वी हैव सीन a major shift in the supply chain. और सप्लाई चेन में प्रेशर की वजह से वी हैव सीन चाइना फ्रेट इंडेक्स शूट अप. चाइना एक्सपोर्ट कंटेनर, चाइना से इमेंस एक्सपोर्ट गोज टू यूरोप, इट शूट अप. सो उसमें मैं नजर रख रहा हूं एंड चलिए देखते हैं क्या हाल है उनका. So global supply chain में जो प्रेशर आया था, so it's China pressure, the index is no longer rising that much. It's a bit delayed data, but still with that data हम लोग देखे थे एक stabilization. But इस stabilization को और थोड़ा scrutiny करके देखते हैं. वो है regional index में. जैसे मुझे पता है जापान is not impacted. Let's remove Japan, Korea, West Africa, South Africa. Let's remove the South America, Australia, New Zealand. So other ones we have removed them. What we can see is till 9 marginal down move, significant down move, Persian Gulf red index. So a little bit of stabilization जो हम लोग देखे थे रेड सी सिचुएशन में रिलेटिव स्टेबिलाईजेशन मुझे दिख रहा है. वो लास्ट टाइम भी हम लोगों को दिख रहा था. इसके अलावा मैं नजर कर रहा हूं, दिस इज ओल्ड डेटा बट दिस इज हैज बीन अ स्टेडी. तो इस ट्रेंड को क्या होता है आने वाले मंथ्स में, ये कमोडिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. दिस इज द ग्लोबल एवरेज डिलेज बाय डिलेड वेसल अराइवल, जो कोविड के टाइम सिग्निफिकेंट गॉन अप, इट हैज बीन राइजिंग. ये रेड सी का टेंशन उसमें काफी कंट्रीब्यूट किया था. इसके अलावा मैं देख रहा हूं इस क्राइसिस को थ्रू द ये जो ट्रेडिंग चैनल्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हमाज, सुएज कैनल डायरेक्टली लिंक टू रेड सी, और उसमें क्लियरली दिखा था व्हाट काइंड ऑफ ड्रॉप वी हैव सीन इन द शिपिंग रेट्स, shipping numbers, sorry. But latest number as per the data on 13th, which is more recent data, we can see the number of ships has slightly gone up. So little bit of stabilization probably यहाँ पे दिख रहा है. Little bit of stabilization, but any volume is still in declining mode in Suez Canal. What's happening with the Strait of Hormuz, where important crude oil channel and its Iran has an influence, similar picture. Overall volume has gradually been growing down in Strait of Hormuz. So geopolitical tension stable but simmering, अंदर ही अंदर चल रहा है tension.
उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं इसका ऑपोजिट इंडेक्स, जहां जिसके थ्रू शिप्स जा रहे हैं, अगर वो लोग सुएज कैनाल को अवॉइड कर रहे हैं, देन वो लोग को जाना पड़ेगा टू रीच यूरोप, केप ऑफ गुड होप। ये मेरे अपने जो प्रीवियस वीडियो है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स। तो एक बार फिर से चलिए देखते हैं। यहाँ पे टाइप कर लीजिए वर्ल्ड मैप, या गूगल में भी मैप अवेलेबल है। लेट्स गो टू मैप। So let's go to map, and map we will look for Suez Canal. This is the Suez Canal, और ये रहा Red Sea, ये रहा Gulf of Suez, and this is basically the Red Sea, ये रहा Red Sea. So trouble is brewing here, उसके वजह से ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर से गल्फ ऑफ एडेन होके शिप्स क्रॉस करके मेडिटेरेनियन में, यूरोप में पहुंचता था आसानी से। नाउ दे आर ट्रेवलिंग थ्रू ऑल दिस एरिया, और जहां पे है ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, यहां से एक्चुअली शिप्स क्रॉस कर रहे। यू कैन क्लियरली सी दिस, दिस इज वेयर द शिप्स आर पासिंग थ्रू। वो चैनल बंद हो गया तो पूरा घूम के यहां से दे आर रीचिंग द यूरोपियन यूनियन। यूरोप में ऐसे इतना, तो इसके वजह से डिले, आई थिंक इट इज स्टिल गोइंग टू गो अप मोर क्लोज, मोर क्लोज इंडिकेटर इज दिस शिपिंग इंडिकेटर, जो बहुत ही लेटेस्ट है, 13th। यहाँ पे मैक्रो माइक्रो में, सो ओवरऑल जितना शिप्स क्रॉस कर रहा था वो इंक्रीमेंट में थोड़ा बदलाव आया है। वी कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ डाउनफॉल, एंड ओवरऑल वॉल्यूम जो पिक हुआ था, वॉल्यूम अभी भी वॉल्यूम क्रॉस नहीं हुआ। सो सम स्टेबिलाईजेशन दिख ही रहा है क्लियरली। जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स क्वाइट क्लियर दैट यस इट इज अ बिट ऑफ स्टेबिलाईजेशन, बट अंदर ही अंदर सिमरिंग चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग नियर, वी आर इन अ बिजनेस साइकिल एंड पार्ट, सो उसमें भी हम लोग क्लियर नजरअंदाज करेंगे कि क्या हो रहा है थ्रू द इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कार्ड। सो फार द स्प्रेड इज गोइंग नेगेटिव। आई थिंक डॉग्स आर हाउलिंग आउटसाइड अ लॉट, सॉरी फॉर दैट। But overall दिख रहा है कि spreads are going down. So it is, we are still not that point end of the cycle जहां पे Fed rate cut करेगा। We want to see ये जो spread है, ये spread we want to see a move to the upside before we become concerned about the cycle end. सो ओवरऑल ये एक मिक्स पिक्चर है ग्लोब का, जो आई होप आप मेरे साथ बात करके एंजॉय किए हैं, ग्लोबल मैक्रो पिक्चर। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।